In the land of Kalakol, the first kingdom, there lived the forefather Ling Sonam and his wife. They made a little field and sowed some seeds in it. From the seeds they received a rich harvest of wheat, barley and peas. One day in autumn the forefather saw something strange. All the grain had turned into worms, and right before his eyes the worms started eating one another, and soon only one huge worm filled the barn. Slowly this huge worm transformed into a beautiful child. The forefather was a little scared. He went to a hermitage, and the diviner there told him, "The child is very special, take him home and call him Dongso Mila Songmo." Soon it was time for Dongso Mila Songmo to get married. Once again the forefather went to the diviner for advice. "You will have to bring him 18 brides born under the sheep sign." The diviner said, "The brides will give birth to 18 heroes who will establish the land of the Ling, where the great King Kesar will be born." Starus na thugna, borus na thugna, khirus na thugna, machi na thugna, kheres kena lo chingi sum sakpa kyungan mana saden to sta bumbu khi wase shamku chi tana dik mana ta so chu gyalla ming pokhare ta kan kyong ju cho cho gyalla so chu gyal ske konta kena ming police sanam khare te gana te pota se ta sia kena lo go khore kan to buna dumbu tas ya ju kena ming takse kheres tase ta na dik ming pokhare ta kan kyong ju cho cho gyalla so chu gyal ske konta kena ming police sanam khare te gana te pota se ta sia kena lo go khore kan to buna dumbu tas ona mana tait na yo chu khurang de re khor ming oche ming cho gyat so cho gyalla Dilas gani ka Margal Khan po nganmo na nga limpa ko lagwa ta de na je ju azar bana awni je chu tas pa kena sas bertan na thap tun thap ta chu las gani ke na las de tunduk thale se chu chani skat purang solore na buthaji lis pari so alabang da thang so ta tholon molang Tanas muluk senchik tulum se da som sola tolon mola Anas muluk senchik tulum se Das mux pao zeler narik sunangala ngiran kyonchiga somala गलम केसर जो है एक बड़ा सा पेड़ है पेड़ को अशांग शाखीन थे एक शाखीन ये है उसको वो होता है दर्पण बोलता है उसका नाम वो एक है एक शाख दूसरा बोलता है पाले वो भी एक शाख है उन वो एक शाखीन में होता है 10-15 कैसेट बढ़ता है उसका कहानी पूरा होना चाहिए ना बल्कि उर्दू में है तारीख में अकबर बादशाह सिकंदर बादशाह जहांगीर बादशाह उसका कहानी है ना जनाब वही जैसा है तारीख तो कितना वक्त लगता है पूरा मुकम्मल करने से 45 घंटा लगता है शुरू उस वक्त हमारे बाप जो है बहुत ज़बरदस्त था उसको याददाश्त था दादा को भी याददाश्त था दादे का याद थे बाप का याद हमको आया
तो आप अपने बाप के साथ जाते थे सुनने? जाता था। कहाँ? जाता था। यहाँ हमारे गांव में 15 आदमी 20 आदमी जमा होते हुए हर वक्त जाड़े के मौसम में 3 महीना हर वक्त जमा करते हुए सुनाता था। तो उस वक्त हमको याद आया, बाप के साथ जाने से याद आया, नहीं तो कहाँ से आएगा मुझे। हाँ। तो वो कुछ देते थे उस वक्त आपके बाप को? कुछ देता था। क्या? वो देता था। वहाँ उन्होंने सब जब होकर एक दिन बकरी करता है, करता था, खर्चा खाता था। दूसरे दिन 3-4 मुर्गी लाकर करता था, उसको देता था। जाते वक्त उसी वक्त 5 रुपया 10 रुपया देता था जमा करते। उस वक्त 5 रुपया 10 रुपया अमीरों को नहीं था। Kesar, I think, is many things. It is basically an epic which tells the story about a God who dies in the heavens, comes down on earth, is reborn, and then goes about setting order from chaos. And so, which is endemic to all epics, almost all epics. And so it is the story of his exploits, shall we say, in various parts of the Tibetan-speaking world. When it was time for Kesar to be born, a voice spoke to Gobzang Lamu from inside her. "Mother, I shall be born on the top of 3 hills. Go there and build a house with 3 stones and 3 beams. Take coral sticks and pearl-white twigs and cover the roof with butter and flour." This the mother did, and the voice said again, "You are a strange woman. Am I a dare child that I'll be born in the hills? Go to the shore of the lake and build a similar house." She did so, and again the voice said, "You are a strange woman. Am I a fish child that I'll be born on the lake?" Then she was told to build another house where the 3 valleys met, then another one in the middle of the field. After that she was sent behind the door of her house, and then to the elevated place in her house, and finally the voice said, "Now bring an offering of food and pencil cedar. Together with me many creatures will be born." I first heard the story of Kesar in 1993 while traveling through Ladakh. Kesar, I was told, is like the mountains of Ladakh, continuous and unbroken. Ever since, I have been traversing these mountains, feeling the scorching sun, the arid air and the chilly nights, looking for storytellers who could narrate the Kesar. I have found many hidden in these valleys. By now, I have recorded over 100 hours of their narration. On a cold December morning in the year 2000, I set out for Wanla in search of Kunchuk Sarpul. I was accompanied by Akbar, who is my friend, guide, driver and interpreter in Ladakh, and a small digital camera. We met a shepherd who became our guide.
Kunchok Sarpon lived on top of a mountain. After trekking for more than 8 hours, we reached his house, completely exhausted, hungry and thirsty. Acha, Goncha acha. Kesar yang mana sebenarnya apa mana yang dilutkan dapat kan Ya di sini no. zoom sih tu lah. Ya. Akhirnya zoom sih tu tado. Sebenarnya mana tetenas karpatanas. Di sini kya? Oh, dis. Akhirnya du cacar samen zoomen sih dukjas. Te tamdawana diring namna ko hawana yang bozum chazri nu patal hungpona yang bo. Hungpona yang bozum chenzri nu godi rooms. Ngan Nganne mis virau. Ya lah kira sih, do kira ni patah ni derung sakpa, patah ni. Oh ni dah tu jadi joskal pun sakta. Ni kesal jalpun kau ngomel tanda. Diri ni thomik kau ngomel tanda duk sinso. Alta kira ngomel masih na kira thomik tanda lao sen ngan na. Diri nau biasa. Kau jauh sen kira kalkun so se. Kisah macam ni rala rule macam. जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो उसके लोरी के तौर पर केसर का ही लोरी गाया जाता है और बच्चे को केसर मानते हैं। अरे तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो केसर ग्याल्पो हो। और जिस तरह केसर ग्याल्पो को अनेकुर्मन ग्याल्मो ने लोरी सुनाया था, तो उसी तरह हम आपको भी, तुमको भी लोरी सुनाते हैं।
अभी आपने ये जो गाना देखा वो है ख़ास केसर के बारे में गाया गया है, जिसे हम गिंगलू बोलते हैं। केसर का जो वो ट्रेडिशन है, केसर जो कहानी हम बताते हैं, जो स्टोरी टेलर्स जो हैं वो गाना गा के ज़्यादा नरेटिव फॉर्म में है, और इसके साथ साथ जो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ऑडियंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाते ज़्यादा हैं, और हर सीन को वो एलोबरेट करते हैं गानों के साथ। When Kesar was born to Gobzang Lamu, many became jealous. She was ostracized and made to leave the village. So the child Kesar grew up as a beggar boy, a mischievous vagabond. He wandered through the mountains. One day he met the beautiful maid Duguma. She was the daughter of King Yapstamba. She invited him to her engagement feast, where she was to choose her husband. So on the grand occasion, the boy went to Duguma's palace. केसर चोचोरू के लिए मतलब वो स्वयंवर जिसे बोलते हैं के लिए गए थे, तो यापस्तोनबा और यूम्समोन्मो जो चोचो जुगू का पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोला भाई जिस किसी ने अगर चोचोरू चाहिए तो वो खुद चोचोरू ही सेलेक्ट करेगा, तो आ जाइए सारे। तो दूसरे दिन आते हैं, बंदा होरी गल्पो मते दागिए गल्पो या नक्सिस की गल्पो, पता नहीं कितने कितने राजा और महाराजे घोड़े पे बैठ के अपने आप को बहुत अच्छा बन के और खूबसूरत बन के बहुत ही बहादुर बन के आते हैं। तो चोचो डुगू और उनकी सहेलियाँ आगे बैठे हैं खतक्स लेके, और वो लोग गा रहे हैं पुंपायास पे काना इमाशारे पुंपायो में काना दवाशारे। तो चोचो डुगू ऐसा गाते हैं, भाई ये ऐसा है, वहाँ से कोई लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहादुर है, उसके देखने में तो बड़ा हीरो लगते हैं, मगर ये मेरे लायक नहीं है, तो छोड़ते हैं सब उनको। तो लास्ट में कैसा रहते हैं, तो उसके वो घोड़े के लगाम को पकड़ लेते हैं, तुम ही हो मेरा फीचर। The elders and Duguma's parents were shocked. Our beautiful Duguma cannot marry a dirty beggar boy. So they organized various competitions, all of which the beggar boy Kesar won. Finally, it was decided to hold a horse race on a glass surface. The winner shall be Duguma's husband. Kesar summoned his divine horse Kengjongnyerpa. We have to win this race. Kengjongnyerpa replied, do not worry, great King Kesar. In one night I can cross rivers and mountains which would otherwise take 50,000 years to cross. But I have not eaten for many days. Feed me a big bowl of gruel made from barley and grass. As the first rays of the sun touched the earth, the race began. The sound of thousands of hoofs shook the earth. A great cloud of dust swirled in the sky. Kesar stood where he was. When the sun was high in the sky, he spurred his horse and they rose into the sky. With one leap, Kesar reached the finishing line. Slowly the other riders arrived, their fine clothes, turbans and crowns dripping with horse dung.
Kesar's horse had emptied his bowels as he passed over them. The riders felt ashamed and accepted the beggar boy as the winner. Kesar is not a heroic epic in the classic sense of that word, where this person pulls out the sword and conquers everybody and is the whole time, sort of on a stage with rippling muscles or something like that. He is not a Herculean hero in that sense. No, Kesar is Kesar as hero. He is Kesar as a priest. He is Kesar as a human being living everyday life. And he's also Kesar as a healer, and mostly, or not mostly, but a good portion of the time, he's Kesar as a trickster. So yes, there is that element of many aspects to his life. There is a episode where Kesar, in his early life, he lives very much in disguised form. And I think it was soon after his marriage, he finds this very difficult to contain anymore. So he goes off into the valley, and there's a storm in which he's wrapped up, and then he suddenly becomes revealed as Kesar. And it is as if he reveals to himself that he is Kesar. He needs that reassurance. And that is, to me, that's a tremendous scene, because it is where you are confronting yourself spiritually. Of all the storytellers I met, the most enjoyable is Appo Jafar. It was he who introduced me to Kesar and became the inspiration for this film. His village Chiktan is famous all over Ladakh for its rich oral tradition. From all accounts, he may be its last surviving professional storyteller. अगर केसर का आसानी किसी को पूरे याद है तो मेरे से मिलने दीजिए। इनाम आपसे क्या मैं ले देगा उसको, बोला ना। बच्चे को भी सीखते हैं, बच्चे इसको याद नहीं रहता है। हाँ जी, ज़्यादातर सबक पढ़ते हैं ना, इसीलिए स्कूल पर जाकर सबक को याद करता है। अभी स्कूल जाकर ज़्यादा तालीम पढ़ने वाला हो गया ना, जब ये तकरीबन रवाज या ख़त्म हो गया। अंग्रेजी उर्दू हिंदी सब अभी सब जोर से पढ़ते हैं ना, इसलिए वो पुराना बातें जो है वो याद नहीं करता, सिखाता भी नहीं, वो कहने वाला भी ज़्यादा नहीं। Yes sir, yes sir. 3 spoon. 1 for my master, 1 for my master, 1 for my dam, 1 for my dam, 1 for the little boy, 1 for the little boy. Pull you down the land, pull you down the land. Twinkle, 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 little star, how I wonder, what you are, what you are. Fatima, Badi, Khatun,
अगर इल्म नहीं हो तो सारा कोई चीज़ भी नहीं होगा। इल्म बड़ी दौलत है बोलता है, इसलिए दौलत है भी है। आपका क्या ख्याल है, ये जो ये जैसे केसर की कहानी है, अच्छा जी, ये इल्म नहीं है? हाँ, ये भी इल्म नहीं है? ये भी पुराना तो इल्म है, लिहाजा वो अभी चलता नहीं। वो किताब निकालने के से तो चलता है, और हर किसी ने किताब नहीं निकाला, इसीलिए वो हमारे पहले बुजुर्ग की बातें तो है, अभी यादगार नहीं रहता है ना, किसी को भी यादगार नहीं, इसलिए इसका कदर सिफात नहीं जानता है। इसका कदर सिफात वो पढ़ने वालों को, इल्म याद होने वालों को मालूम होगा। It is my piali boat and I will aim on the main point. Broken. I lost broken. कोई और मिलेगा ऐसा? पहले ज़माने का ये हमें यही बनाता था होलल, जो चिड़िया कबूतर चकोर जैसे पकड़ते थे, भेड़ बकरियों को देते थे। जो हम पहाड़ी पर बकरी भेड़ बकरियों को जाते हैं, इस वक्त ये ज़रूरी है इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि किसी जगह पर लुमड़ी भी आता है, भेड़िया भी आता है, उसको उड़ाने के लिए भी हमें ज़रूरत है। वो केसारी में उठाता था हर वक्त, हाँ, वो जादू के साथ भी उठाता था, निकाल के भी उठाता था। ये बताइए केसर की क्या क्या कुछ निशानियां हैं यहाँ? केसर की, हाँ। यहाँ तो नहीं, पहाड़ पर है, हमारे यहाँ पहाड़ पर भी है, वहाँ भी है, मैंने कहा ना, हाँ। वहाँ लमसू में भी है। क्या है? हाँ, लमसू में है, उसके घोड़े का नक्शा वहाँ पूरा रखा है उधर। वो हमारे वहाँ ऊपर नींदुम बोलता है, बड़ा ऊंचाई पहाड़ है, वहाँ पर एक बड़ा सा खेत है, खेत में बड़ा गोल पत्थर है, उसने वहाँ से को फेंक दिया था बोलता है। हमारे सुनने में केसर जैसा उस वक़्त कोई भी नहीं था। 18 बादशाहों में से वो अच्छा था। 18 बादशाहों पर हुकूमत किया, तो किसी न किसी दिन वो क्या नाम, वो दूर से आ रहा था, और दूर से आकर गार नहीं किया, वो एक मैदानी जगह पर, वो चंपाल होता है ना उधर, गुजर बकरवाल, जैसे उन्होंने बहुत भेड़ बकरियाँ, हज़ारों से ज़्यादा है ना, लाखों करोड़ों उनको भेड़ बकरियाँ आता है, वो पालने के लिए वो आदमी भी जाता है ना, एक बूढ़ा आदमी साखर जाता था चांसा वाला, तो उसने इम्तिहान के लिए केसर ने क्या भेड़िया बन के उसके भेड़ बकरियों को इस तरह से छलांग मारा, तो उसने गोफीन दे दिया भेड़ियों को, बोलता है यहाँ से गोफीन मारने से भेड़िए के इस चेहरे पर लग गया, बोलता है वो, या तो भेड़िया मर गया। तो उसी वक़्त का हमारे फूल फेरे की मिसाल है, गलम केसर भेड़िया बन के जाता था ना, गलम केसर भेड़िया बन के गया, तो भेड़िए के सर पर पत्थर लग गया, भेड़िया मर गया, तो केसर भी मर गया, बोलता है। हाँ, एक सवाल में, हाँ, और एक दूसरा सवाल में केसर मरा हुआ नहीं, वो अभी भी है, तो उसको बोलता है हमारे ज़बान में गलम केसर दुनिया फिरने वाला आखिर में फकीरी के साथ मर गया, बोलता है। Kesar became the king of Ling, and Duguma his queen, and they started living in the magnificent Ling castle. Order and peace were established all over the land. After 3 years, Kesar went to the cold valley to meditate. He'd been there for 1 year when his celestial aunt, Ane Kurman, appeared. Kesar, the demon of the north, is creating havoc. The time has come for